Hello, beautiful India. Welcome back to Economics with the Music. खोलो खोलो दरवाजे पर्दे करो किनारे कुटे से भरी ये हवा मिल के चुड़ाओ जरे कजरा रे तेरी कारे कारे नैना ओ नैना economics with the music, my dear. Saving function and the consumption function, numerical questions, CBSE asked. Different methods. Part 2. Are you ready? I am here for you to explain. Before that, you don't forget to subscribe, pressing bell icon. A like button needs to be pressed. This is only the motivation for me to uploading more videos and more questions. Believe in me, I am here for supporting you, young India. Come on, we will begin without wasting our time. Okay? Saving function. Question is given. ध्यान से सुनना है. कंसंट्रेशन होना चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए, अपन को क्यूरियोसिटी होना चाहिए. क्या क्या है इसके मतलब क्या है? कंसंट्रेशन एकाग्रता एंड क्यूरियोसिटी इच्छा शक्ति और पेशेंसी क्षमता. If you are having 4 marks in the birth, come on, let's begin. Saving function s is equal to minus 50 plus 0.10y. This is what the question. First question हमको दिया है कि question नहीं, this is the value which is given. The data of value दिया है अपन को. Saving is equal to minus 50 plus 0.10y. Okay. And X and investment. What is X and investment? It's a planned investment. What is it? It's a planned investment. So investment पहले इन्होंने business economy में किया है is equal to rupees 450. Okay, this also we have written very simple and easy. देखो, calculate equilibrium level of income. सबसे पहले हमको equilibrium level of income को calculate करना है. चलो पहले अपन वो करेंगे, then after we'll move to the second question. So equilibrium level of income calculate करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? We have to memorize, recall the point which we have discussed in aggregate supply. ओके, सो अग्रीगेट सप्लाई में हमने पढ़ा है AD इज इक्वल टू aggregated demand, AD is equal to C plus I, aggregated supply is equal to C plus S. So AD is equal to AS हमने प्रूव किया है, C plus I is equal to C plus S हमने प्रूव किया है. Then after ये दोनों को काट के I is equal to S भी प्रूव किया है. You don't have any doubt in it? This is clear, ma'am. What are you saying? How much time? How many times we have done? No need of explaining these all things. Okay, my dears? So, no need of this. Right? Now we'll move to saving. Okay, so we know that saving is equal to investment. According to this concept, we are writing minus 50 plus 0.10y is equal to 450. कोई प्रॉब्लम? किसी को कोई प्रॉब्लम है? नो प्रॉब्लम, नॉट एट ऑल. सो विल मूव टू, वी विल टेक दिस 0.10y द किंग इज इक्वल टू 450. हमको पता है मैम मैथमेटिक्स मत सिखाओ. ये माइनस 50 को इधर लेके आया है तो अपना क्या हो गया? प्लस 50 हो गया. Right? Then now the y is equal to 450 plus 50. हमको पता है मैम, very simple, 500. Then divided by this, अपना हीरो आ गया इधर 0. हमको ऑलरेडी पता है कि पॉइंट हटाना है तो क्या करेगा? ऊपर एक 0 लगाना पड़ेगा. मैं ये तो सिंपल क्वेश्चन है. So that is equal to rupees 5000. That's all. This is our equilibrium level of income. So y is equal to, हमको फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर मिल गया, सिंपल एंड इजी, बिल. So rupees 5000. Okay, crore. Right? Now what we have to do is we have to calculate the multiplier. Multiplier means what?
K is equal to 1 by marginal propensity to save. We know that 1 by marginal propensity to save, ये तो अपनी फंडामेंटल इक्वेशन है, इसमें अपन कुछ नहीं कर सकते, डेरिवेशन पहले से हमने कर चुके हैं, लीनियर फंक्शन का फॉर्मूला है, कुछ नहीं. सो K इज इक्वल टू 1 by MPS. MPS क्या है अपने फॉर्मूला में दिया है इधर, ये जो चीज है ना MPS. ये कैसे MPS हुआ है? सेविंग का फॉर्मूला क्या है? ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस व्हाट 1 माइनस B into Y. Right, this 1 minus B is what called MPS. Right, so MPS का वैल्यू हमको पता है, that is equal to 1 by क्या है MPS 0.10. This is already given. Right, so K is equal to 1 by 0. Again हमको ये जो पॉइंट को हटाना है, तो इधर एक 0 आएगा, उसका मतलब अपन को 10 मिल गया. K is equal to 10. Simple, easy. Now again one more formula we will apply because we have to calculate something. That is the second question. Additional investment which will be needed to give an additional income level of 3,000 crore. My dears, additional investment. कितना इकोनॉमी में इंक्रीजिंग इनकम, इंक्रीजिंग लेवल ऑफ इनकम, द what investment also needs to be get increased for multiplying the level of income. लेवल ऑफ इनकम को मल्टीप्लाई करने के लिए कितना इन्वेस्ट करोगे उतना इनकम बढ़ेगा. सो हमको क्या करना है, कितना एडिशनल इनकम इन्वेस्ट, प्लांट इन्वेस्टमेंट के साथ कितना एडिशनल इनकम इन्वेस्ट किया है, एडिशनल इन्वेस्टमेंट किया है इकोनॉमी ने, तब हमको 3,000 करोड़ इनकम बढ़ के मिला है, बढ़ा है. ठीक है, 3,000 इनकम कैसे बढ़ा है इकोनॉमी में? बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग एडिशनल इन्वेस्टमेंट. सो हाउ मच अमाउंट इन्वेस्ट करने के कारण इनकम 3,000 बढ़ गया है, क्वेश्चन ये है. सो फॉर दैट वी हैव टू कैलकुलेट K is equal to change in income upon change in investment. ये हमारा दूसरा फॉर्मूला है. Understand? So for this K already we know the value and delta Y change in income here the question में ही दे रखा है, income level of 3,000, that is अपना 3,000 हो गया है, 3,000 already and change in investment. Simple. So डेल्टा आई हमने इधर ले लिया है, हमारा हीरो इधर आएगा, 3,000 डिवाइडेड बाय 10 we will get 300. Okay, so this is change in investment. This is the answer of अपना सेकंड क्वेश्चन का आंसर है, this is अपना फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर है. ये वाला जो 500 है ना, 5,000 I mean 5,000, this is our क्वेश्चन नंबर 1 के आंसर है. Right, simple and easy. So this way we have to calculate. Another method question, we are going to another question we are going to discuss it. सबसे पहले saving function S is equal to this and planned investment was this. फिर additional investment किया है, because of that reason इनका income बढ़ गया है, 3,000 एक्स्ट्रा बढ़ गया है. ये जो 3,000 कितना additional income invest करने के कारण बढ़ा है, ये हमने सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व किया है. पहले हमने K इज इक्वल टू 1 by MPS फॉर्मूला डाला, K की वैल्यू मिल गया. सो K इज इक्वल टू डेल्टा चेंज इन इन्वेस्टमेंट अपॉन चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट. K इज 10 इज इक्वल टू 3,000 इज द एडिशनल इनकम डिवाइडेड बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट. हमको चेंज इन इन्वेस्टमेंट निकालना है, दैट इज इक्वल टू 3,000 अपॉन 10. यू विल गेट दिस आंसर. ऑलराइट, नाउ क्वेश्चन नंबर 2. यस, इन second question number 2, delta I is equal to 1200, marginal propensity to save is given 0.2, investment multiplier and the change in final income we have to calculate. Very simple and easy, there is no need for any tension. So tension देना है नहीं लेना है, ठीक है. K is equal to 1 by MPS. Okay, 1 by MPS. So K already we don't know. So 1 by MPS, K is equal to marginal propensity to consume 1 by 0.2. Alright. So we know that point हटा दिया, ये दोनों घट गया, अपन को मिलेगा 5. Right.
So investment multiplier already we have got, it is 5. Question number 1 के आंसर मिल गया है. 5 is an investment multiplier. And now we'll move it to change in final income. How to calculate change in final income? Final income calculate करने के लिए क्या करना है? K is equal to, we know that change in income upon change in investment. Very simple question it is. Change in income we know 5 is equal to change in income निकालना है. Change in income upon change in investment already given 1200. 5 is equal to change in income upon 1200. So delta y is equal to 1200 multiply 5. That we will get rupees 6. Change in income is equal to rupees 6,000 crore. Right? Now the question number 3. Once again, very simple and easy. These all the questions. It's not like I am writing from my own mind. No, these all questions are asked by CBSE in different years. Okay, so this method of questions can come for your examination. Once you did practice, then you won't face any difficulty. Simple and easy. समझने की चीज है कि change in investment in an economy, change in investment is given 1200 and marginal propensity to consume 0.2 is given. आज के यू सीबीएसई इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कैलकुलेट करो, चेंज इन फाइनल इनकम कैलकुलेट करो. हम डरते हैं भगवान क्या करना है. डोंट वरी माय डियर्स, वी हैव टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर आ गया है तो फॉर्मूला है k इज इक्वल टू 1 बाई एमपीएस. एमपीएस ऑलरेडी दिया है, k इज इक्वल टू 1 बाई 0.2. सो k इज इक्वल टू 1 बाई 0.2 वी विल गेट 5 एंड K is equal to change in final income निकालना है. change in final income निकालने के लिए, change in income निकालने के लिए always you have to keep the formula K is equal to delta y upon delta I. So 5 is equal to delta y upon this formula डालना है, multiply करना है. आपको क्या मिलेगा? 56,000 crore. Now we are discussing about question number 3. Question number 3 we are going to discussing about saving is equal to minus 25 plus 0.25y and planned investment is given. Now we are going to calculate equilibrium level of income, same formula. Then after aggregated demand income of rupees 500 crore. This question also asked by the CBSE and so concentrate. Alright, so planned investment we know that S is equal to I, same formula we are taking here. S is equal to I. So as per that we know minus 25 plus 0.25y is equal to 200. So we will calculate 0.25y here, then what 225 we will get here, and y is equal to 225 divided by 0.25y, I mean 225, you will get is 900 crore. ठीक है, you will get rupees 900 crore. Right, now what we are discussing about, now we know that aggregated demand income of rupees 500 crore. So next formula is aggregated demand AD is equal to C plus I वाला formula अपन को अप्लाई करना है. So for that what is the formula? aggregated demand की formula है, consumption function की formula पता होना चाहिए. AD is equal to, we know that AD is equal to C plus I. We know that AD is equal to C plus I. So here what we have to do is the formula we are applying, consumption function formula, C plus autonomous consumption plus marginal propensity to consume into y plus this investment. We can write this way, no consumption function. So here what is the problem here? हमको क्या मिला है, इसमें ये वैल्यूज निकालना है. कौन सा वाला? सेविंग इज इक्वल टू minus 25 plus 0.25 y वाला. So here what we can write 25, because minus 25 consumption, autonomous consumption means 25. We won't be able to write minus. This is saving function, that is what minus 25. Saving it is say ये saving के बारे में बता रही है, इसमें minus. इधर अपन को saving का नहीं है, consumption निकालना है. So 25 plus B क्या है? MPC निकालना है. MPC is equal to 1 minus MPS. ठीक है, ये फॉर्मूला पता है ना? MPC is equal to 1 minus MPS. So अपन को क्या करना है? 1 minus 0.25
क्वेश्चन क्या है 0.25 इंटू 500 अपना इनकम, ये जो इधर क्वेश्चन में दिया है एडी इनकम ऑफ ₹500, सो इनकम प्लस इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी हमको दिया है 200, राइट, दिस इज द फॉर्मूला। सो व्हाट वी हैव टू डू इज ये दोनों को माइनस करो पहले, सो 25 प्लस ये दोनों माइनस करेंगे 0.75 मल्टीप्लाई 500 कर लो, फिर अपन को करना है प्लस 200 करना है। व्हाट यू विल गेट, द आंसर इज 225 प्लस इसका ये दोनों को मल्टीप्लाई करो कितना मिलेगा अपन को, व्हाट वी विल गेट, ये दोनों को मल्टीप्लाई करो अपन को 375, सो दैट इज इक्वल टू कितना है 585 से 0, 9 plus 10 1 and 5 and 600 rupees 600 करो, right? This is all about what? This question, saving function given and equilibrium level of income given. Equilibrium level of income हमको निकालना है, equilibrium level of income निकालने के लिए saving is equal to investment, we know that. As per हम लोग ने क्या किया है, equilibrium level of income निकाल दिया, then after अपन सीधा क्या किया है, we know this formula already, and AD is equal to C plus I किया है क्योंकि इधर aggregated demand इनकम ऑफ ₹500 करोड़ बताया है, सो AD is equal to C plus I, autonomous consumption plus marginal propensity to consume into Y plus I, so marginal propensity to consume में से हमको क्या करना है, कंज्यूम निकालना है तो 1 माइनस एमपीएस, क्योंकि ये इधर हमको एमपीएस का वैल्यू दिया है, सो वी हैव डन 1 माइनस 0.25 इंटू नेशनल इनकम प्लस इन्वेस्टमेंट वैल्यू डाला है, सो 25 प्लस दिस, इसको माइनस किया 0.75 मिला है, इनकम से मल्टीप्लाई किया प्लस 200 किया, अपन को 225 प्लस ये दोनों मल्टीप्लाई करके 375 मिला है, सो इनकम आपको एग्रीगेटेड डिमांड क्या मिला है, इनकम इज ₹600 crore. Still clear? Now we are moving to question number 4. देवा हो देवा गणपति देवा तुमसे बढ़कर कौन, स्वामी तुमसे बढ़कर कौन। Hello, next question my dears, fourth question, very simple and easy. Given the following information, identify whether the economy is in equilibrium or not. इकोनॉमी इक्विलिब्रियम है कि नहीं, दिया हुआ डेटा को सॉल्व करके आपको बताना है, वेरी सिंपल। अब देखो क्वेश्चन दिया है ऑटोनोमस कंजम्पशन, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड नेशनल इनकम आल्सो गिवन, तो दिया है तो अपन को क्या करना है, आपको ऑलरेडी वी नो दैट ये इज इक्वल टू नेशनल इनकम, है ना। ये अब सोचेंगे ये क्या बोल रहे मैम, एग्रीगेटेड सप्लाई इज इक्वल टू एग्रीगेटेड डिमांड that is equal to national income, aggregate supply is equal to national income, हमने शेड्यूल बना के प्रूव किया है ऑलरेडी। सो keeping this concept in mind, we are going to calculate it and understand or identifying that whether this given date of information, according to this date of information, whether the economy is in equilibrium or not, means AD is equal to AS or not, ये प्रूव करना है पिन को, ठीक है। एडी इज इक्वल टू एएस और नॉट, ये हम पिन को क्या करना है, प्रूव करना है। फॉर दैट हाउ कैन बी राइट, सो एडी इज इक्वल टू, वी नो द फॉर्मूला, एग्रीगेटेड डिमांड इज इक्वल टू ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, सिंबॉलिकली बी इनटू वाई, राइट, ये अपना फॉर्मूला है। सो वी नो दैट इज इक्वल टू ऑटोनोमस एडी इज इक्वल टू हियर एडी एग्रीगेटेड डिमांड, ओके। सो एडी इज इक्वल टू क्या करना है अपन को, 200 प्लस 0.70 इंटू 1000, राइट। सो व्हाट इज द वैल्यू हियर, सो 200 प्लस ये दोनों मल्टीप्लाई करो, अपन को मिलेगा 700, 0.7, सो मल्टीप्लाई करो 700, यू विल गेट 900 rupees, 900 crore. But here the national income is equal to AS is equal to national income, already I told you. So what AS हमको क्या दिया है, national income is 1000, but 900 is our aggregate demand. So ये दोनों अलग वैल्यू है, मीन्स 1000 है, इधर 900 है, so economy is in equilibrium or not, economy is not a equilibrium, so economy
is not a equilibrium. Because here national income, that means aggregate supply is greater than aggregate demand. डिमांड से सप्लाई ज्यादा है. इनकम मीन्स aggregated supply. National income means aggregated supply. So A is greater than AD. This we have proved. Now we are moving to the question number 5, the last question of this video. Yes, come on. घड़ी बदल रही है रूब जिंदगी. Question number 5, the last question. Consumption is equal to 100 plus 0.75 y and investment is given autonomous investment, that is 150 crore. हमको क्या कैलकुलेट करना है? We have to calculate equilibrium level of income, consumption and saving at equilibrium level of income. This is what we have to calculate. Okay. So first of all, we will calculate equilibrium level of income. Before that, we will write the values. Consumption value C is equal to 100 plus 0.75 y is given, and autonomous investment. So autonomous investment is equal to 150. Right. Now, how do we going to calculate this? With the help of what the equation? Y is equal to C plus I. Understand? Y is equal to C plus I. Already we know national income is equal to consumption plus investment. So we can write Y is equal to, this is already we have done this question. There is no doubt at all. 100 plus 0.75 Y plus I investment 150. Planned investment, इसमें कोई वो नहीं है. Autonomous investment है, it is means before zero level of income we are investing. Determination of income and employment में already हमने कर चुके हैं. इसमें कोई डाउट होने की जरूरत नहीं है. मे बी आप लोगों को लगेगा मैम ये ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट में क्या डिफरेंस है नॉर्मल इन्वेस्टमेंट. दिस इज ऑलरेडी विदाउट अर्निंग इनकम द इकोनॉमी इन्वेस्टमेंट फॉर रनिंग एनी ऑफ द business. Okay, so now here we will solve this question. Y minus this we are taking here 75y, that is equal to 100 plus 150. We will get here 250 and 1 minus 0.25. You will get 0.25y. Okay, so y is equal to कितना है 250 divided by 0.25 you will get, and that is equal to 500 divided by 25 you will get 1000. Okay, rupees 1000. Correct. This is equilibrium level of income. So calculate equilibrium level of income. We have calculated equilibrium level of income. Y is equal to C plus I. Now after this what we have to do is consumption we have to calculate as well as saving we have to calculate. Understand? Yes, equilibrium level of income, already we know that we have calculated Y is equal to equilibrium level of income. Equilibrium level of income हमने कैलकुलेट किया है, that is ₹1000. Correct. Okay, this already we have calculated. Now we are discussing about how to calculate consumption and saving. Consumption calculate करने के लिए अपनी formula क्या है? What is the formula of consumption? Already we know C is equal to what? Autonomous consumption plus marginal propensity to consume, or V into Y. Right? So consumption function already we have got the value 100 plus 0.75 into Y. Y is the value which we have calculated, that is 1000. Okay, so into 1000. Right? So that is equal to, we'll multiply this plus what you will get. What is multiplication? 750. You will get 750, right? 0.75 multiply 1000, you will get 750. That is equal to 850. So consumption you will get
800. So 850 crore. That is what consumption. Now we are calculating what saving. Saving, how to calculate a saving function? Saving function also very simple and easy. We know that how to calculate saving function. Aggregate supply is equal to, or national income is equal to C plus. Yes, this is the formula, right? So AS, which implies national income, right? Y is equal to C plus S. Understand? So C plus S, which means that what is consumption and what is saving. If we are getting Y is equal to C plus S, we know that S is equal to income minus consumption. Very simple. Okay, we have to use our brain for calculating, my dears. Income is equal to aggregate supply. Aggregate supply means क्या है? National income. So income is equal to consumption plus saving. So saving हमको निकालना है, अपनी क्वेश्चन में क्या है, हमको क्या निकालना है? Saving. We have to calculate saving. S is equal to Y minus C, right? So that is equal to, already we know national income, already हमने calculate किया है, Y is 1000. And our consumption we have calculated here, that is 850. So 1000 minus 850, what we will get? 150 rupees, 150 crore. Right? So this is all about the method of calculation of saving function, consumption function, investment multiplier, etc. So this is very easy. These are the different methods of questions which is continuously last 5 years sample paper. From that they continuously asked different methods question I have selected for making you children to understand. So this method of questions, from these all, any one method can come for your examination. Okay, so work it out and practice make a person perfect. So this is all about. Signing out, Sarda Kishore, economics with the Miss AD.